Yeah, we are in the place of Around the time of my birthday, Royal Enfield made a nice gesture. They sent me a code and a link to their new Make It Yours program for me to configure a helmet and a t-shirt. So without wasting much time, I got down to doing it. There were 3 helmet choices to choose from. I chose the one that looked more off-road based, and then there was a lot of color options, a lot of decal options that I could choose from. So this is how it went. And after I was done configuring it, it took about 18 days for me to get it. That was not the estimated time of arrival. It took longer than that. The only reason why I'm pointing it out is because I think it makes for a very good gifting option because of the customization that it allows you to do. Now, if you are doing this, it's better that you keep some time in hand. Don't necessarily go with the estimated time of arrival because it might take a little longer since this is customized and you might just miss the date that you're probably targeting. And that's the only reason why I'm pointing it out. Anyway, so my stuff is finally here. So let's take a closer look at how the actual product looks compared to the one that I configured. Okay. So that is what it is. Make it yours. Unfortunately, this is broken, but I like the box. I like the packaging that it came in. And there it is, the helmet with a nice foam lining so that the helmet is safe. It's tumbled a little inside. It's got its own satin bag and more packaging. Well, that's for the goggles, I'm guessing. We'll come back to that in a bit. Well, yeah. Rash 21 be positive. From what I remember of my customization video, this was in the center here on the stripes, but here it's a little offset. Not a problem, nice and clean, readable. Though this is a decal, I just hope it withstands the test of time. This, however, looks like paint. It's not a decal. This is a decal. The helmet is slightly heavy, but not too heavy. I think this is going to be good. I'll have a separate review of this helmet later. But yeah, this is what it is with a tan interior. And there is the Royal Enfield branding on the inside as well. Doesn't get a double D-ring. I was really hoping that it comes with a double D-ring, but it doesn't. It's this strap kind of mechanism, and I'm not a big fan of that. But yeah, here we are going to talk about the customization. So the customization is right. The color is just what I expected. It's a nice matte finish. I like that this is a paint finish, though I can see some sort of a seam here. I'm not sure if the camera is catching it up, but there's a bit of a seam, a bit of a cut in the paint, so to say. I don't know what that is for, but that's on both the sides, so I think it's something to do with how it's turning around. But yeah, I have this decal and it's on one side only. Well, so that's the helmet. That was the satin cover that it came in, and these are going to be the goggles. Yep, those are the goggles with the embroidered red Royal Enfield lettering on it. I think it looks quite nice, but without the motorcycle, it just doesn't complete the look. So let's get ourselves the right motorcycle for this helmet. And that motorcycle is this, the 2021 Royal Enfield Himalayan. So 2021, why I'm stressing on that is because ये नई गाड़ी है. There are some changes. तो quickly देख लेते हैं क्या changes हैं for 2021. The most important being this. Now it comes with the Tripper navigation. Tripper navigation हमने देखा था पहली बार Meteor पे, और अभी ये यहाँ पे integrated है. This is what the instrumentation looks like. Instrumentation में कुछ change नहीं है, but this is the new addition. And of course, I don't know if you spotted it, the new color. So this is the new silver color. इसमें एक bottle green भी है और एक नया black shade भी add हो गया है. These are the new colors for 2021.
एंड नाउ इफ़ यू नोटिस, इसका ये जो रैक है, दिस रैक हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन साइज़. पहले द रैक यूज टू कम ऑलमोस्ट टिल द नी रेसेस. तो उससे क्या होता था कि जो टॉलर राइडर्स थे, दे वुड हिट देयर नी अगेंस्ट दिस रैक, बट दैट रैक हैज़ नाउ बिकम स्मॉलर. इसके जो एक्सेसरीज़ हैं, आई डोंट हैव अ वर्ड ऑन दैट येट इन टर्म्स ऑफ whether the old accessories will fit this. So in case you buy, say, the fuel attachment, will it fit the new rack? वो फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, but we'll get a clarification on that and I will add it to the description in the video. But if you also notice, the seats थोड़े से मोटे लग रहे हैं अभी. They are looking fatter क्योंकि इसका जो foam है, that has been increased, it has been made more comfortable. और इसका जो आप कलर देख रहे हो, this is a brown shade. You can customize that through Royal Enfield's Make It Your program. तो जैसे हमने हेलमेट को कस्टमाइज़ किया, टी शर्ट को कस्टमाइज़ किया, वैसे आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कलर यू लाइक. देयर विल बी मल्टीपल चॉइसेस ऑन दैट एज वेल. और कस्टमाइज़ करते वक्त आप इसको टूरिंग सीट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, तो आपकी बाइक टूरिंग सीट के साथ ही आएगी. स्पीकिंग ऑफ टूरिंग, देयर इज़ अ न्यू रैक एट द रियर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसकी जो हाइट थी वो थोड़ी कम हो चुकी है बिकॉज pillion को while getting on the motorcycle they would hit their leg against this. That was a complaint by a lot of riders. तो वो अभी कम कर दिया है, उसकी हाइट कम कर दिया है. It is now almost in line with the rear seat and you get this little plate in case you want to mount luggage at the back. इसकी जो maximum load capacity है that is 7 kilos there. एंड दे डोंट हैव पैनियर्स राइट नाउ. अभी तक 2021 हिमालयन के लिए एक्सेसरीज़ में पैनियर्स का कुछ मेंशन नहीं है, बट आई एम गेसिंग इट विल बी एडेड एट अ लेटर स्टेज. सो दोज आर द प्राइमरी चेंजेस. द ट्रिपर नेविगेशन लाइक वी स्पोक अबाउट, नए कलर्स, ये नया रैक, अपडेटेड सीट्स और ये पीछे का टेल रैक. तो ये हैं चेंजेस हिमालयन में. In fact, I'm going to be riding out the motorcycle very soon. मैं आपको इसका जो ब्लैक कलर है वो भी दिखा देता हूँ. तो ये है ब्लैक कलर हिमालयन का. तो जैसे मैं कह रहा था, रैक आप वहाँ देख सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन हिमालयन. तो उसका जो रैक है, इट्स ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द नी रिसेस ऑन द टैंक. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स मच शॉर्टर एंड दिस इज़ व्हाट द ब्लैक कलर लुक्स लाइक. मैट ब्लैक फिनिश है. यू ऑल्सो हैव दिस 01 लेटरिंग ऑन इट. यू हैव सम ग्लॉस फिनिश हियर. और इसका जो सीट फिनिश है, सीट फैब्रिक है, दिस इज़ ऑल्सो मैट. आई क्वाइट लाइक इट. काफ़ी एक्सपोज्ड स्पॉन्ज की तरह दिखता है ये. But I quite like the design. It might get dirty very easily. You can already see that. लेकिन जो feel है, it feels a little premium. This material feels premium compared to the old seat. So अगर हम देखें again, the seat looks a little fatter. Visually बहुत ज़्यादा difference नहीं दिखेगा आपको. This is the old Himalayan again. So that seat looks a little fatter and ये एकदम ही soft cushioning है. Compared to that, इसका cushioning थोड़ा सा firm है. So long distance comfort मेरे ख्याल में better होगा. But is it that? Is the long distance comfort better? Is something that we will see once we ride the motorcycle. In fact, that is what I'm going to be doing. This is the very motorcycle जो मैं चलाने वाला हूँ. तो इसका review जो है overdrive पे होगा. We will put it up on overdrive. So do stay tuned to overdrive. Otherwise, one other change is this touring windshield. If you look at the windshield here, the shape is almost the same. लेकिन इस विंडशील्ड की जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज़ की है. रॉयल एनफील्ड गॉट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स की विंडशील्ड हाइट थोड़ी और होनी चाहिए थी फॉर बेटर विंड डिफ्लेक्शन. दैट इज़ वाई दे हैव डन दैट. सो ये जो दो मेन चेंजेस हैं, द रैक एंड दिस विंडशील्ड, इट एसेंशियली केम फ्रॉम द टॉलर राइडर्स. उनका फीडबैक था ये कि फॉर टॉलर राइडर्स it didn't feel all that great. So I'm even guessing this is not just Indian feedback but also feedback from Royal Enfield's export markets. So for taller riders you have this slightly taller windshield and this comes standard. Not like you have to choose it. ये अलग से आपको लेना नहीं है. This is the standard fit. So is the rack, so is the tail rack and so are the new seats. So
ऑल दीज चेंजेस आर चेंजेस फॉर 2021. जैसे मैंने कहा, ये पुरानी हिमालयन हमारे सामने है कंपेयर टू दिस इज़ द 2021 हिमालयन. यहाँ जो हीट सिंक है, जो एग्जॉस्ट का शेप है, जो एग्जॉस्ट का साउंड प्रोफाइल है, ऑल दैट रिमेन्स अनचेंज्ड कंपेयर टू द 2020 मॉडल, द BS6 मॉडल. हमने पहले भी कहा था कि BS6 का इंजन काफ़ी स्मूथ लग रहा है अभी कंपेयर टू द BS4. सो आई एम गेसिंग दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस एज वेल, बिकॉज नो ट्यूनिंग चेंजेस. कुछ लोगों ने आपने ये भी पूछा था कि हैव दे मेड एनी चेंजेस टू द chassis. वेल, देयर आर नो चेंजेस टू द chassis. In fact, I am now going to quickly go in and show you the 2020 model just for visual reference. तो chassis में कुछ changes नहीं है, metallurgy में कुछ changes नहीं है. Like I said, exhaust manifold में भी कुछ changes नहीं है apart from the color of the heat sink. उसमें जो हमने देखा, the heat sink was black in color on this particular motorcycle. और ये जो हमारा 2020 मॉडल है, इस पे the heat sink is a metal finish. You still have that pre-cat bulge जो हमने BS6 कन्वर्जन में देखा था. ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इवन ऑन द 2021 मॉडल. ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी नो चेंजेस टू दैट. इसमें जो टू टोन कलर्स आए थे, नाउ दे हैव गॉन फॉर अ ग्रे स्केल कलर ऑप्शन. जैसे मैंने कहा, वी हैव द ब्लैक दैट आई शोड यू ऑन द आउटसाइड. देयर इज़ द न्यू सिल्वर, मैट सिल्वर, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द बॉटल ग्रीन.